So we have finished with the basic part of Python. Now we are going to go into a bit advanced. Okay. So the first thing that we are learning today is how to read and write files. Okay. So basically, whenever we write a program, we will take some input from some user or somewhere, and then we will try to process it, and then we will try to save it. Okay. None, till now we have not saved it. We have just displaying to the screen, right? But we have never saved it. But what is the use of a data which is not getting saved, right? So that's why majority of the applications you will see, they will use some kind of a database to store the data so that later on we can retrieve it and see the output. Okay. So now in common terms, I could say database is also a file where we write something. Okay. Then later on we will read and get the data, right? So before learning an actual database, how to read and write to database, we will learn how to read and write to a normal file. Okay. So a text file, how to read a text file. Okay. So let's see about that. Okay. So let's look at the function which is used to read a file. Okay. So to read a file, the function is open. Okay, that's it. The function name is open. Okay. Now this open uh, will accept two parameters. Okay, it accepts many parameters, but at least two is important. So the first one is the name of the file, and the second one is the mode in which you want to open. Okay. So now before we open it, let me see if I have, yeah, I have a file called names.txt. Okay. So you can see I have a file called names.txt which has four names: orange, apple, pear, and watermelon. Okay. So these are the names. So now I want to open that file through my main7.py. Okay. So let's see. So the first parameter is the name of the file. Okay. So let's say names dot text. Okay. So this is my first parameter. My second parameter is going to be the mode in which I want to open it. Okay. So there are several modes that you can use. So there is a read mode. Okay. So read only mode. That means what? You can only read from the file. You cannot write it. Okay. You can also do R plus. Okay. So R plus means read and write. Okay. Then you have W, which is to write. Okay. Write only. So you cannot read the file. You can only write to the file. Okay. But if you do W plus, then you can read and write. Okay. If there is then A, okay, so A is for append. Append means when you use W, that is for write, you are actually, whenever you open the file, you are clearing everything and starting fresh. Okay, so every time you run the program, everything is fresh. Okay, but when you do A, that is append, every time you run the code, the file on which you are writing is not cleared, it is just appended, मतलब आगे add करते जाता है. Okay, so normally you would be, you know, if you are creating a logging application or somewhere you just want to have the data stored like a database, then A should be the best option. Okay, because A will not delete the old data. Okay, so it will keep the old data as well as you can write new data. Okay, now if you want to read also, then you have to do A plus. Okay, so A plus gives you read and append permission. Okay, so these are some of the modes that you can use. Now usually if you do not know which mode to use, then I think A plus will be the best mode, right? Because it gives you read as well as write, and write also in the append mode. Okay, so that is, I think, the best option in most cases. But let's right now use the read mode. Okay, so only the read mode. Now, once you run this command, it returns a
a variable that we have to store, which is like a pointer to the file. Okay, so I can say file pointer. Okay, so basically whatever this is returning, I'm saving it inside fp. Okay, now fp is not the content. Okay, so fp doesn't have these contents. ये कंटेंट आया नहीं अभी तक fp के अंदर. fp एक जरिया है उधर तक पहुंचने के लिए, राइट? सो fp is required to reach there, but it doesn't have the data yet. Okay, now let us see how to get the data. Okay, so but before getting the data, there is one more thing I have to do, that is mandatory, that whenever you open a file, you have to at the end close the file. So for that, fp dot close. Okay, that's it. So these two things are mandatory. Okay, so whenever you open it, you have to close it. Okay, so that is basic strategy you should use. Now let us see, once we have opened, once we have closed it, between that you can read and write to the file. Okay, so provided you have the correct mode setup. Okay, so but right now I have only read, so I can only read. Okay, so let's see how to read. So I can do fp dot and I can say read. Okay, I can do fp dot read, and here I can specify how many characters I want to read. So let's say I say 3 characters. Okay, so I want to read 3 characters. Let's save it. And if I try to run it, you will see there is no output. Okay, so let me just run this program again. Yeah, so you can see there is no output, right? Why? Because this is returning something, but I am not printing it. Okay, so let's write a print command. And now if I run this, you will see ORA. Why ORA? Because in my names, you will see I have orange, but the first 3 characters are ORA. Okay, so it is reading only 3 characters. Okay, so this is how you can read specific number of characters. Okay, now the best part is, what do you think if I run this again? FP read 3. So will it again give me ORA or will it give me NGE? So now let me explain you what exactly happens. Okay, so the way this FP works. Okay, so FP is basically like a cursor. Okay, so the way the cursor works is, the cursor, when you open it, it is at this particular location. You can see the cursor is blinking right now, right? So this is my let's suppose this is my cursor location. Okay, whenever you use any read command, okay, so there are many read commands. This is the first read command we are doing. Whenever you use the read command, the cursor moves that many location, and then it gives you whatever it has moved. Okay, so it has moved from here till here, right? So now the cursor is at this particular location, right? And we have got ORA. Now when you do read 3 again, it will start reading from the place where the cursor last was. Okay, so it was at this particular location, right? So now it will start reading from here. Okay, so this is very important concept in Python, reading Python files. So there is something called as a cursor, and whenever you read, that cursor moves to that particular location. Okay, so जितने आप read करोगे उतने location पे वो जाके रुक जाएगा, और next time जब आप read करोगे तो वहां से चालू होगा. ठीक है, that is very important. So now if I run this, you will see I get ORA and then NGE. Okay, so that means what? It first read this much and then it is reading after that. Okay, so if I put it one more time, what do you think? What will it read? So let me run this and show it to you. You can see it is reading ORA, NGE and AP. ये क्या है? इसका क्या मतलब है? Can anybody tell me? APQ. नेक्स्ट तो था APP. ठीक है, ORA हो गया, NGE हो गया, फिर APP आना चाहिए. ये सिर्फ AP क्यों आया? और ये एक्स्ट्रा ये क्या है? स्पेस. सो बेसिकली in a text file, when you open it, you are not able to see that there is a one more character over here. Okay, जब आप लोग प्रिंटिंग करते हो तभी आप डालते हो /n, आपको याद रहेगा.
बट यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में वो दिखता नहीं है, राइट? व्हाई? बिकॉज टेक्स्ट फाइल is not giving you the raw file, it is processing it and then showing it to you. Okay, so basically क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लास्ट है ना, यहाँ पे एक बैकस्लैश एन है, बट वो अपने को दिखता नहीं है. बट व्हेन यू रीड इट, इट इज कंसिडरिंग दैट आल्सो एज अ कैरेक्टर. ओके, सो उसको उसको थोड़ी मालूम है कि बैकस्लैश एन स्पेशल कैरेक्टर है. इट ट्रीट्स इट लाइक अ कैरेक्टर. ओके, so it reads that also, so that will be the first character, then a will be the second character, and then p will be the third character. okay, और उसके बाद वो प्रिंट करता है, और प्रिंट करता है तो प्रिंट का कमांड में अगर स्लैश एन आया तो क्या होता है, न्यू लाइन जाता है, राइट? दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी देयर इज अ न्यू लाइन. ओके, so that is the use of this. Now if you actually want to see what this data is, repr. Okay, so if you use this command, and if I now show it to you. Okay, so now if I run this, can you see the actual raw string? We can see what is exactly being read. Okay, so this repr gives you the raw string. Okay, so you can see actually there is a बैकस्लैश एन देयर. ओके, बट जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो प्रिंट कमांड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बैकस्लैश एन आया मतलब नीचे लेने का, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर प्रिंटिंग डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो यू विल सी दैट इट गोज वन स्टेप डाउन. ओके, एंड सिर्फ एपी प्रिंट होता है. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अभी क्या है कि ऐसे 3-3, 4-4 कैरेक्टर लेना is not feasible, right? I want the entire row, right? So I want the entire line. So how to get the entire line? So for that you have another command. It is called as read line. Okay, so I have read line, and now if I run this, you will see I get complete one line. Okay, orange. Okay, but actually if I just put it inside repr, okay, and then if I print it, you will see actually it is reading that last character also, बैकस्लैश n. okay, so ये बहुत important है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा एक नीचे जा रहा था. okay, so let me show you. और एक बार रीड लाइन करता हूँ, 2 बार रीड लाइन करता हूँ. okay, so if I run this, you can see ऑरेंज के साथ भी नेक्स्ट लाइन आ रहा है, एप्पल के साथ भी नेक्स्ट लाइन आ रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एंटर है. यहाँ पे भी एंटर है, यहाँ पे भी एंटर है, यहाँ पे भी एंटर है. वाटरमेलन के बाद एंटर है क्या? वाई? बिकॉज अगर एंटर होता तो यहाँ पे ऐसा लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे रुकता, बराबर, बट यहाँ पे नहीं रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, राइट? दैट मीन्स एंटर नहीं है, राइट? एंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, राइट? तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ही आप रीड करोगे तो आना चाहिए. ओके, सो लेट मी read this 4 times and let's run it, and you can see for orange I have enter, apple, pear and watermelon. okay, so ये इससे मेरा ये क्लियरली समझ में आता है कि लास्ट वाले स्टेटमेंट में एंटर नहीं है. ओके, okay, so this is how we can read lines, okay, in fp. okay, so when I do this, let me remove all these things, or in fact, yeah, so let me remove all these things and I will just print. So this method is used to read all the lines from start to end. okay, so basically what I'm trying to do is I'm reading all the lines what are there inside this. okay, mostly यही चाहिए रहेगा अपने को, right? अपने को थोड़ी एक लाइन रीड करना रहेगा, right? 90% of the times that this is the case that you want to read everything. okay, so you are doing for line. okay, this can be any variable. okay, you want, मैंने इधर line लिया है, आपको जो लेना ले सकते हो. in fp is the pointer, so file pointer. so for line in fp, तो क्या होगा, जितने लाइंस है फाइल में उतने बार ये फॉर लूप रन होगा और वो प्रिंट करके देगा. okay, so now if I run, you can see orange, apple, pear, watermelon. okay, now for your question, what you can do is you can actually
हम लोग यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल के रोक सकते हैं, ठीक है. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से काउंट equal to, let's say, 0, right? And here we can keep on increasing the count. Okay, sorry, equal plus equal to 1. Okay, and then here we can check if count is not equal to, let's say, आपको कौन सा लाइन चाहिए. हम लोग इसको 1 से चालू कर, नहीं ठीक है. आपको कौन सा लाइन चाहिए, चलो समझो एप्पल चाहिए, सिर्फ एप्पल चाहिए आपको, तो इट इज लाइन नंबर 2, राइट. सो इफ काउंट नॉट इक्वल टू 2 आई विल print. Okay, otherwise I will not print. Okay, so let's see if this works. अरे कोलन डालने भूल गया. Okay, so oh sorry. Okay, so you can see if I do this, if count is equal to 2 I will print, otherwise I am not printing. Okay, so इससे क्या होता है, you can exactly get whichever line you want. So okay, I am getting apple. Okay, so अगर आपको समझो watermelon चाहिए तो line number 4 है, right? So I can say 4th line. Okay, so if I run this you will get watermelon. Okay, so now what we are going to do is, now you can see after every printing you can see an additional blank space over here, right? So ये blank space क्यों आ रहा है, because यहाँ पे enter किया हुआ है, right? So now you will say कि यहाँ पे तो extra enter नहीं है, यहाँ पे तो एक ही enter है. That is because print जो command है वो खुद एक enter मारता है. If you remember, अगर मैंने 2 print किया तो दोनों अलग अलग लाइन पे आता है, right? That means what? Print command खुद एक enter मारता है plus ये वाला enter. That means 2 enters. That's why you're getting 1 enter from here, 1 enter from here, right? That's why in the when you read a file you get 2 enters. If there is 1 enter you will get 2 enters, one from the print, one from the file itself, right? Now to remove that, what you can do is you can modify the string that you read. Okay, so line is equal to, now I want to remove the last character. Last character ही problem है ना, last character में enter है, तो अगर मुझे last character remove करना है तो क्या कर सकते हैं? Any idea? Length of line minus 1. Okay, so basically, yeah, somewhat correct. We can use indexing. Okay, so you can do line of line, and if I do colon, if you remember I have taught you this, so if you do colon you get the entire thing as it is. Okay, so ये पूरा का पूरा चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे. But if you do, let's say, colon 1 to, let's say, 4, okay, so if you do colon 1 to 4 तो आपको सिर्फ 1 to 4 कैरेक्टर्स ही मिलेंगे. ओके, सो 1 to 4 मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3. ओके, सो 3, बिकॉज 1 to 4 जब बोलता हूं तो 4th वाला कंसिडर नहीं होता है, एक कम कंसिडर होता है, राइट? सो आई विल गेट RAN. ओके, सो फ्रॉम 1, बिकॉज सी फर्स्ट वाला 0 कैरेक्टर होता है, राइट? सो 0, देन 1 2 3, राइट, 4 and 5, राइट? तो उसमें से मैंने क्या लिखा, 1 to 4 लिखा, राइट? सो 1 to 4 लिखा तो क्या होगा, तो 1 2 3 तक ही जाएगा 1 to 4 लिखा तो, राइट? सो RAN मुझे आउटपुट मिलेगा, राइट? बट मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे सब कुछ चाहिए, स्टार्टिंग से सब कुछ. सो फॉर दैट, इफ यू रिमेंबर, if you only put colon, okay, and the first parameter is blank, that means starting से सब कुछ. Okay, and इधर you can say stop. Okay, so let's say stop at 4. Okay, so starting से 4th तक. Okay, so and what is 4th will be, मतलब starting से आएगा और 3 तक जाएगा, 4th में नहीं जाएगा. Okay, so this will be 0 1 2 3. Okay, so इतना लेगा वो, 4th तक जाएगा नहीं. ओके, बट वो भी नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, मुझे चाहिए लास्ट कैरेक्टर स्किप करना है, राइट?
So if you want to do this, you can simply write -1. Okay. So what basically you are trying to do is starting say ending tak. Okay. So what you're saying, starting say ending tak. And if you remember the way our नंबरिंग वर्क्स, जो भी आपने यहां पे लिखा सेकेंड लिखा वो खुद कभी कंसिडर नहीं होता है, उससे एक कम कंसिडर होता है, राइट? तो मतलब ये क्या रहेगा, स्टार्टिंग से -2 तक आपका डेटा रहेगा. इफ यू राइट -1 ओवर हियर, आपका डेटा कहां तक रहेगा, -2 तक, मतलब सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक. ओके, सो जैसे कि ये हो गया, ये वाला जो कैरेक्टर है एंटर, दैट विल बी -1, दिस विल बी -2, दिस विल बी -3, -4, -5, -6 एंड -7. ओके, सो यहां से स्टार्टिंग से -2 तक मुझे मिलेगा, राइट? दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन सेज. ओके, तो इससे मेरा क्या हो गया, लास्ट वाला कैरेक्टर उड़ा दिया मैंने, राइट? नाउ इफ आई रन दिस, यू विल सी आई गेट परफेक्ट रिजल्ट. ओके, सो ऑरेंज, एप्पल, pear and watermelon without any enters. Okay, so I hope this part is clear. Okay, so now let us quickly look at how to write. Okay, so now right now if I want to write something onto this file, let's see what happens. So fp, for writing you have the write command. Okay, so you can say write, and here you can simply specify what do you want to write. Okay, so let's say कोई फ्रूट का नाम बताओ यार, ग्रेप्स. ओके, सो मैं राइट करने का ट्राई करता हूं, देखते हैं राइट होगा कि नहीं होगा. ओके, सो लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी it says not writable. Why? Because the mode in which you have opened it is in read mode. Okay, so let's try to open it in which mode, write mode. Okay, so when you do write mode, you cannot read, you can only write. Okay, but W का एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इनफैक्ट when you use W, let me just, yeah, so I have this, so you can see right now I have the names, right? So let's see what happens when I run this. Okay, so when I run this program, let's see what happens. So if I run this, okay, done, right ho gaya, there is no error, perfectly right ho gaya. Let's come over here and see what happened. Can you see? सब कुछ उड़ गया और सिर्फ grapes बचा. Okay, that means whenever you do write, whatever is currently there in the file, everything is removed and the new data is put up. Okay, अगर आपको यही चाहिए तब ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली अपने को ये नहीं चाहिए, राइट? अपने को जो भी डेटा उसमें पहले से ही है वो तो वहीं पे रहना चाहिए, राइट? सो इफ दैट इज द केस, आई विल जस्ट पेस्ट द डेटा बैक एंड सेव इट. एंड नाउ इंस्टेड ऑफ W, I will do A, that is for append. Okay, now if I run this, अभी भी सब कुछ चला, राइट? बट लेट्स सी क्या हुआ, राइट? यू कैन सी वो कहाँ पे राइट किया, वाटरमेलन के बाद उसने राइट किया. व्हाई? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, एंटर था नहीं, एंटर था नहीं तो मतलब आपका कर्सर यहाँ पे था, राइट? सो कर्सर यहाँ पे था तो वहीं पे उसने राइट कर दिया, राइट? सो लेट्स पुट एन एंटर, and after watermelon also we have an enter. Now if I save it and if I come and execute this, you will see that it comes perfectly over here, right? But अभी अगर मैं फिर से इसको रन करूं, देखो क्या होगा, दिख रहा है? एग्जीक्यूट तो हो गया, बट यहां पे अभी क्या हो गया, ग्रेप्स के बाद तुरंत और एक ग्रेप्स आ गया, नए लाइन पे नहीं आया. क्यों नहीं आया? बिकॉज एंटर है ही नहीं ना यहाँ पे एंटर है ही नहीं. नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन मोर टाइम, यू विल सी वो कंटिन्यूसली एक ही लाइन में डालते जा रहा है. सो इफ यू वांट टू हैव want to put it in a new line, what will you do? मतलब every entry in a new line, what should you do? Yeah, you can do write line, or simply you can do this ना, grapes के बाद एक enter मार दो ना,
प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं? So let me just do this, save it, and let's run this. Can you see I'm getting it over here? Run it again. I'm getting it on a new line. Let's run it few more times. I am running it around 5 times. You can see it is, everything is coming on a new line. Okay, so this is how you can manage these things. Okay, so writing two files in this mode, whenever you do plus, okay, so plus means you get the read permission also. Okay, so without the plus, if I try to do fp dot read, let's say 5 characters, okay, if I do this, you will see I get error, not readable. Okay, so this is very important to understand. So if you do only a, you can only append. Okay, that means you can write, you cannot read it. Okay, to read it and write it, you have to have a plus sign. Okay, so once you have this, then you can read and write. Okay, and this is basic, right? After this, there is something called as the file type. Okay, so normally it is T, so that's why we don't write it. So T means text mode. Okay, so T means text mode. So normally this will work if it's a text file. Okay, so it's a text file or text based file like a CSV file or anything like that. Okay, but if it's an image file, okay, if it's an image file, if it's a video file, if it's any binary file, then text mode will not work. Okay, so for that you will need to put B. B is stands for binary, so read binary file. Okay, so this is just advanced, so I'm not expecting you to understand this part right now, so that is not important. कि इसके लिए अलग से ओपन सीवी के टूल्स है, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि कितने मोड से. सो रीड, राइट एंड अपेंड. ओके, सो ये 3 चीज, और सबके अगर आगे प्लस लगाओगे, सॉरी पीछे प्लस लगाओगे, तो रीड का भी परमिशन मिल जाता है. ओके, देयर इज दिस मोड आर प्लस, okay, which is for reading and writing, and there is this mode W plus, which is also for reading and writing. Now what is the difference between R plus and W plus? Okay, so that is very interesting to note. Okay, so now let us, now names dot text, ये मैंने पहले ही बना के रखा था, right? So let's say fruits dot text. Okay, ये fruits dot text मैंने बनाया. Okay, so can you see that file over here? No, it is not there in my folder. Okay, so let's try to run this and see whether it works. So you see there is no such file or directory called fruits dot text. Okay, now let's do this same with W plus. Okay, and see if it works. So if I do W plus and run, can you see what has happened? Okay, this is the difference. Okay, so this is the difference between W plus and read plus. Okay, that is R plus. So R plus में it will only open the file if it is already present. Okay, मतलब वो पहले से existing होना चाहिए, then only it will open read and write mode. Okay, so दोनों मोड करता एक ही चीज है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, बट डिफरेंस कहाँ पे है? जब अगर फाइल नहीं रहेगा, पहले से फाइल नहीं रहेगा, तो रीड प्लस बनाएगा नहीं, यू इट विल गिव यू एन एरर, it will say file does not exist. Okay, but when you do W plus, if the file is not there, it will create it for you. Okay, so that is the difference between R plus and W plus. Okay, so ये देखो fruits का file बन गया. Okay, now we will take a simple program on this. Okay, so let's see what we can do with this thing. Okay, so let's open Excel. Let's create a new blank sheet. Right here I am going to make a file with, let's say, serial number. Okay, and name
of fruit. Then let's say क्या लिखे, quantity, unit cost, okay, and और क्या आना चाहिए, सब total, let's say total, okay, so total and ten kg, okay. Let's see unit cost. This is around 250, mango 300, pear 180, grapes 80, and watermelon, let's say 50. Okay. So this is what I have created. Now what I want is I want to find out the total. Okay. So I am going to say subtotal. Here I want subtotal. Then I want tax. And here final total. Okay. So this is what I want. Okay. एक simple app बनाना है अपने को. So basically what this is, ये अपना किराने वालों का या फ्रूट वालों का जो बिल सिस्टम रहता है ना, वो है. ठीक है. So basically you will be entering this and आपका प्रोग्राम क्या करना चाहिए, ये फाइल को रीड करना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालना है. ठीक है. सो दैट विल बी द टोटल कॉस्ट, राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा करने के बाद इसका जो टोटल रहेगा वो यहाँ पे आएगा. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे आएगा 5% टैक्स. ओके. 5% टैक्स करने के बाद ये टोटल, दैट इज टोटल ऑफ दीज टू should come over here. Okay. So this is what I want to make, right? So let's see how to make this. Now, first of all, if I save this in Excel format, then obviously I cannot read it in Python right now without any other library. Raw read karna hai to possible nahi hai. Okay, let me show you why. Okay, so let me first save it. Save as, let's go to desktop and save it as, let's say, fruits.excel. Okay, so ये मैंने save कर दिया. Now let me go. So this is the file, right? So if I right click and open it with, let's say, Sublime or Notepad or anything, okay, you can see it opens like this. Okay, so this shows that this is a binary file. I cannot read it directly with Python unless I use the B tag. Okay, वो भी use करके कुछ फायदा नहीं है अपने को, because हम लोग देख नहीं सकते कि अंदर content क्या है, right? So that's why this format is not good for us right now. So I will show you another format in which we can store, which is easy for Python to read. Okay, so let me go to File, click Save As, and instead of Excel, I will come down and save it as CSV. Okay, so comma separated variables. Okay, so that is what CSV stands for, comma separated variables. So let's select that and save it. Okay, now let's close this, and you can see I have fruits.excel and fruits.csv. Okay, now इसको भी डबल क्लिक करूंगा तो भी वो खुल रहा है, वैसे ही एक्सेल फाइल जैसा ही खुल रहा है, राइट. बट इफ आई राइट क्लिक एंड ओपन इट विद नोटपैड प्लस प्लस, कैन यू सी द डिफरेंस? दिस इज द डिफरेंस, राइट. सो डिफरेंस क्या है कि you can actually read the contents. Okay, so you can read it line by line and you can do it. Okay, so this is what I want for my code. Okay, so now if I keep it over here, I cannot read it. Okay, why? Because the file, whichever you want to read, it should be in the same folder as your Python file. Okay, so let me take this, put it inside my Python folder where my code is. Okay, so my code is this main7.py, and you can see my fruits.csv,
right? Perfect. Now let's come over here and let's see. Yes, fruits.csv aa gaya, ye raha, right? Now let's open it. Okay, now to open it, I have, let's say fp is equal to open, and let's call open, and the name of the file is fruits.csv. And which mode should I use? So A. Okay, so if I do A, will I be able to read? A plus. A plus करना सर वो पड़ेगा. बाइनरी फाइल है ना सर B. हाँ, सर सॉरी, बाइनरी फाइल, सर नहीं मैं बाइनरी फाइल एक्सेल है तो प्लस B कर. एक्सेल रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं CSV रीड कर रहा हूँ. एक्सेल रीड करता तो मुझे बाइनरी करना पड़ता, राइट, बट मैं एक्सेल नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, CSV देखो ओपन करके खुल रहा है ना डायरेक्टली. That means this can be read in text mode, right? So we don't have to worry about that. So I just have to do either A plus, or I can also do R plus. Okay, so ये भी चलेगा. Why? Because फाइल तो पहले से ही है, तो ये एरर नहीं देगा, राइट? फाइल अगर नहीं होता तो मैं ये R plus यूज नहीं कर सकता, राइट? बट कैन आई डू W plus? नो सर. Why? तो पूरा चेंज कर देगा ना डेटा अगर राइट करेंगे तो. यस, राइट. W plus का प्रॉब्लम क्या है? ये पूरा का पूरा डेटा उड़ा देगा, राइट? फ्रेश चालू करता है हर बार. सो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. सो आई कैन नॉट यूज W plus. I can use either A plus or R plus. Okay, so let's select A plus. Okay, and now let's write, let's read everything. So for, okay, before that, before I forget, I have to do close. Okay, close मैं भूल जाता हूँ, आप लोग भी मोस्ट प्रोबेबली भूल जाओगे, इसके लिए बेटर है कि पहले ही लिख दो, राइट? Then let's read it, read every line. So for line in FP, let's do line equal to line. मुझे लास्ट वाला कैरेक्टर निकालना है, राइट? सो इसके लिए मैंने ये वाला स्टेटमेंट डाला. नाउ आई कैन प्रिंट line. Okay, let's see what is the output. So if I run this, fruits.csv main.7. Okay, so let me use R plus. Yeah, so R plus works. So once I get this, now I have all my data. Okay, I have all my rows, but I don't want all the rows. Okay, so I don't want to read everything. I want to read the first line separately. Okay, because the first line is what? The header, right? So table ka jo header rehta hai wo hai. So what I can do is I can come over here and say header is equal to fp dot read line. Okay, तो मैंने अभी क्या किया, fruits.csv में से पहला लाइन अलग से सेव कर दिया हेडर में, बिकॉज उसके साथ मुझे कोई भी काम करना नहीं है, उसको एज इट इज आउटपुट में डालना है, राइट? सो मैंने उसको एज इट इज रख दिया. ठीक है, उसको मैंने कुछ नहीं किया. नाउ आई एम रीडिंग ऑल द लाइंस. ओके, सो व्हेन आई नाउ रीड इट, आपको क्या लगता है, फिर से हेडर आएगा कि हेडर के आगे से आएगा? मतलब फर्स्ट लाइन को छोड़ के आएगा कि स्टार्टिंग से आएगा? सर स्टार्टिंग से आएगा ना सर. स्टार्टिंग से आएगा नहीं. Okay, why? Because if you remember, I've told you there is a cursor. So whenever you read anything, you are basically changing the cursor's position, right? So when you do read line once,
सो आपका कर्सर यहाँ से पूरा कवर हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है, राइट। सो अब जब आप फॉर लूप मारोगे तो यहाँ से नीचे तक पूरा करेगा वो, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने पहला वाला लाइन हटा दिया, उसके बाद वाले सब लाइंस मैं फॉर लूप से निकाल रहा हूँ। ओके, सो इफ आई रन दिस नाउ यू विल सी दैट हेडर गायब हो गया, ठीक है, बिकॉज हेडर मैंने पहले ही अलग से सेव कर दिया। अब बाकी सब आ गए, राइट। अब इसके अंदर भी मुझे कितने रोज को एक्सट्रैक्ट करने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 5 ही रो एक्सट्रैक्ट करने हैं करंटली, बिकॉज 5 रो में मुझे वो कैलकुलेशंस करने हैं, राइट। बाकी तो क्या है, डायरेक्टली मुझे रीड करके उसका टोटल सब्स्टिट्यूट करना है बस, राइट। सो अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा, or else what we can do is, since everything has the same syntax, what we can do is do the same thing for everything. Okay, so let me show you what do I mean by that. Okay, so अभी मैं क्या करना है, अभी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक ही लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। ये लाइन, अब ये लाइन को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? हाउ विल आई एक्सट्रैक्ट ईच पार्ट सेपरेटली? I have to Split. use the split Split. function. Okay, so whenever you have a string and there is a separator, always remember हम लोग split use कर सकते हैं, right? So let's say we take a variable, let's call it data, okay, is equal to line dot split, okay, line dot split, and here मुझे separator देना पड़ेगा, okay? अगर कुछ नहीं दिया तो separator क्या होता है? Space, but यहाँ पे space नहीं है separator, यहाँ पे क्या है? कॉमा है सेपरेटर, राइट। सो मुझे स्प्लिट के अंदर मैंने सेपरेटर दे दिया कॉमा, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू प्रिंट दिस, लेट्स कम डाउन एंड प्रिंट डेटा एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। दिख रहा है सेम आउटपुट, बट अपने को क्या क्या मिला, सब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ आई हैव एवरीथिंग सेपरेट। ओके, सो अपना पहला स्टेप डन, लिस्ट में तो कन्वर्ट हो गया। अभी इसमें से अपने को फर्स्ट 5 रोज को निकालना है, उसको एडिशन करना है, राइट। सो फॉर दैट वी विल हैव टू हैव अ काउंटर, लेट्स पुट अ काउंटर, काउंट इज इक्वल टू लेट्स से 1, ओके, क्योंकि अपने को 5 ही रो में जो हम लोग एडिशन मल्टीप्लीकेशन करने वाले वो 5 ही रो में करना है, ठीक है। आगे तो है ही नहीं ना, आगे वो नंबर्स ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे, राइट, बिकॉज वो तो सब टोटल टैक्स और फाइनल है, उसके अंदर ये सब वैल्यूज है ही नहीं। तो 5 ही रो को आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, इसके लिए मैं ये काउंटर डाल रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इफ काउंट is less than or equal to 5, okay, if it is less than equal to 5 then मैं जो करना है वो करूंगा, ठीक है, डेटा के साथ, otherwise I will not do it. Okay, so let's see what all things I have to do, right। मतलब मैंने ये करने से मेरा क्या हो गया, अभी मेरा ये जो भी इस if के अंदर लिखूंगा ना वो सिर्फ इतने 5 रो के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, बिकॉज काउंट मेरा वहां तक ही रहेगा, राइट। सो ऑब्वियसली I will have to increment the count also now. Okay, so for that I will come over here and increment count plus equal to 1, ठीक है, increment करता हूँ count and let's start from 0 rather than 1. We will start from 0 so that first iteration में ही ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा तो फर्स्ट रो मिलेगा, 2 होके सेकेंड रो मिलेगा, थर्ड रो मिलेगा, फोर्थ रो मिलेगा और फिफ्थ रो मिलेगा, ओके। 6th रो पे जाते ही ये इफ फॉल्स हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस and this, okay, and convert it into integers. Right now these are strings, okay, because multiplication करना है ना, तो multiplication करना है तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में, राइट। सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस लिस्ट, ये इतना बड़ा लिस्ट है, इसमें से मुझे ये वाला एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, दिस इज इंडेक्स 0,
this is index 1 and this is index 2 and this is index 3 and this is index 4. ओके, सो मुझे क्या करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना, पहले तो 2 और 3 को इंट करना है, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 4 में स्टोर करना है, सिंपल. ओके, सो लेट्स ट्राई दैट. सो अपना डेटा स्टोर्ड है डेटा वेरिएबल में, सो डेटा ऑफ 2 इज इक्वल टू इंट डेटा ऑफ 2. ओके, सिंपल. सो डेटा ऑफ 2 को मैंने इंट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट आई विल कॉपी दिस, पेस्ट इट एंड आई विल मेक दिस 3. राइट, तो ये और ये इंटीजर बन गया. अब मुझे मल्टीप्लाई करना है और इसमें स्टोर करना है. राइट, सो लेट्स से डेटा ऑफ 4. ओके, डेटा ऑफ 4 मतलब ये वाला पार्ट. ओके, इज इक्वल टू डेटा ऑफ 2 इंटू डेटा ऑफ 3. ओके, ये हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन. राइट, नाउ लेट अस ट्राई टू प्रिंट इट and see whether I'm getting the perfect output or not. Okay, print data. Right, let's see. Data, print. Okay, let's run this and see. Okay, perfect. So I'm getting, you can see 250 and after multiplication I'm getting 250. ये भी 1 था इसलिए 300. ये देखो 180 था, 180 का ट्वाइस 360, 380 का 3 टाइम्स 240. ओके, सो ये परफेक्ट हो गया अपना. ठीक है, अपना ये पार्ट हो गया. अभी क्या करना है, ये डेटा 4 को अभी इसका टोटल निकालना है. राइट, इसका टोटल कैसे निकालेंगे, सो लेट्स कम, यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेते हैं. क्या लेंगे, सब टोटल, SUBTOTAL, सब टोटल इज इक्वल टू 0. ठीक है, इनिशियली स्टार्ट करते हैं 0 से. सो सब टोटल विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पे मेरे को अपना एक रो का टोटल मिला. राइट, तो उसको मैं ऐड करते जाऊंगा. सो सब टोटल प्लस इक्वल टू डेटा 4. राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, हर रो में ये जो वैल्यू है उसको सब टोटल में ऐड करते जा रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ. सो पहले 250 ऐड होगा, फिर उसके साथ 250 प्लस 300 ऐड होगा, फिर 300 प्लस मतलब 250, 300, 360, 240, 500, ये सब ऐड होके सब टोटल में आ गया. ओके, सो नाउ आई हैव एवरीथिंग रेडी परफेक्टली. अब मुझे क्या करना है, लेट्स प्रिंट इट आउट. ओके, सो लेट्स कम ओवर हियर. अब मेरा इफ का काम खत्म हो गया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो लेट्स से टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ द सब टोटल. ओके, सो सब टोटल में जितना भी अमाउंट है उसका 5%. सो 5% इज कितना रहेगा, 5 डिवाइड बाय 100. राइट, so I can say multiply by 0.5. right, so बराबर ना, 5 divided by 100, हाँ, multiply by 0.5 will give me 5% tax. okay, so ये जो भी रहेगा वो मुझे टैक्स मिल गया. right, and then now the total will be subtotal plus the tax. simple. okay, तो ये हो गया मेरा फाइनल ये. राइट, सो लेट्स प्रिंट दिस आउट. प्रिंट करते हैं. पहले तो डेटा तो प्रिंट हो ही रहा है. राइट, नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट सब टोटल इज इक्वल टू सब टोटल. राइट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और टैक्स लिख देता हूं. तो टैक्स इज इक्वल टू टैक्स एंड फाइनली टोटल इज इक्वल टू टोटल. ओके, सो ये सिर्फ प्रिंटिंग कर लिया मैंने. आई थिंक दैट इज इट. ओके, सो ये हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी. नाउ इफ आई रन दिस,
You can see. Okay, so now क्या प्रॉब्लम हो गया? After every step total and subtotal is running. Why? Because ये for loop के अंदर आ गया For loop गलती में। से, राइट? सो मुझे इसको पूरा सेलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट टैप कर दिया. ओके, शिफ्ट टैप करने से यू कैन डू इंडेंटेशन. ओके, सो मैंने अनइंडेंट कर दिया तो वो अभी फॉर लूप के बाहर आ गया. ठीक है, फॉर लूप के देखो सेम लेवल में आ गया, मतलब बाहर आ गया. ठीक है, नाउ इफ आई सेव इट एंड रन इट अगेन, यू विल सी आई एम गेटिंग फर्स्ट 5 एंट्रीज, उसका साथ उसका कैलकुलेशन भी आ गया. उसके बाद उसका सब टोटल आ गया 1650 टैक्स. अरे बाप रे, इतना बड़ा टैक्स, गड़बड़ किया क्या मैंने? हेलो सर, 0.05 0.05. 0.05। ओके ओके ओके, 0.05 है क्या? गड़बड़ हो गया. ओके ओके, सो 1650 82 टैक्स और 1732.5. ओके, सो दिस इज माय प्रोसेस्ड फाइल, राइट? इसका एडवांटेज क्या कहाँ पे पता है? जब हम लोग इंडस्ट्रीज में जाते हैं ना, तो मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज द सॉफ्टवेयर्स दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज अ लॉग फाइल, और लॉग फाइल में समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, या आपके पास पहले से रेडीमेड एक्सेल फाइल है बनाया हुआ, और उसको आपको प्रोसेस करना है और सेव करना है. सो इन दैट केस Python helps you reading that file, doing the calculation and putting the calculated value inside the file. Okay, so right now मैंने अभी तक डाला नहीं है फाइल में डेटा, अभी तक मैंने सिर्फ कैलकुलेट करके रखा है. ठीक है, so the next step is to put this data in these locations. So now you see यहाँ पे अभी तक कुछ आया नहीं है, राइट? ये सिर्फ मैंने डिस्प्ले किया है, बट अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है उसके साथ, मतलब कुछ भी output डाला नहीं है, right? So now let us see how to do the output. Okay, now to do the output I want another file. Okay, what is that another file? Another file will be the output file. Okay, so let's say I create one more file. Okay, so let's call it fp underscore out. Okay, so ये मैंने ले लिया fp underscore out और fruits आउटपुट. ओके, तो ये फाइल ले लेते हैं फ्रूट्स आउटपुट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ अपेंड प्लस. ओके, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट डू यू से रीड प्लस, आई एम डूइंग अपेंड प्लस. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मैंने दो फाइल ओपन किया है, एक जिसके अंदर डेटा है और दूसरा है जिसके अंदर मैं डेटा रीड करके प्रोसेस करने के बाद सेव करूंगा. वो फाइल है fruits_output.csv. ओके, सो ये फाइल अभी तक है नहीं, वो अभी बनेगा जब मैं रन करूंगा. ओके, नाउ बिफोर आई गो अहेड आई शुड क्लोज दिस फाइल सो दैट इट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. क्लोज. ओके, सो अपना एक प्रॉब्लम खत्म हो गया. नाउ जैसे हम लोग रीड किए थे ना, उसी हिसाब से हम लोग को राइट भी करना है. ओके, सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या रीड किया था? हेडर, राइट? सो हेडर में कुछ चेंजेस है क्या? नहीं है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट, राइट? सो fp out dot write header. Okay, let's do this. Let's run this and see what is the output. Okay, so if I run this, you can see everything is working. Now if I go to fruits, nothing is obviously fruits में तो कुछ change होगा नहीं, because output हम लोग कहाँ पे store कर रहे हैं? fruits underscore output में. Okay, so let's come, you can see new file is created, fruits underscore output, and if you see I am getting only the header right now, क्योंकि मैंने उतना ही output किया है अभी तक, right? So now let us see if I run this again what will happen. Okay, so let's run this again. फिर से रन हो गया, फिर से ओपन करूंगा, अब ये दो बार आ गया, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ विच मोड आई शुड यूज ओवर हियर, राइट? कौन सा मोड यूज करना चाहिए यहाँ पे फ्रूट्स आउटपुट के लिए? W+. W+ यूज करना चाहिए. व्हाई? सो दैट व्हेनेवर
नए बार रन होगा तो पूरा क्लियर होगा और नए से चालू होगा बाकी से. ओके, सो लेट्स सी. आई एम नॉट डिलीटिंग एनीथिंग. नाउ लेट्स रन दिस. Can you see? Only one line is there. If I run this again, still only one line is there. Okay, so this is perfect. So you can see which mode to use when. Okay, so ये हर एक मोड इंपॉर्टेंट है, कौन सा कब यूज करना है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है, सो ये हो गया पहला लाइन आउटपुट. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो नेक्स्ट लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन है, राइट. प्रिंट डेटा कर रहा हूँ, मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करना है, मुझे कहाँ प्रिंट करना है? fp.write, sorry, fpout.write. Okay, and can I write data directly? Can I write data directly? Anyone? Data is a list. Can I write list directly? No. Okay, why no? Because if you see, write command only accepts string, not a list. Okay, so मतलब क्या करना पड़ेगा? पहले ये डेटा को मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा. ओके, कैसे स्ट्रिंग बनाऊंगा? मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया था? उसको स्प्लिट किया था, तो मुझे यहाँ पे वापस अभी उसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, राइट. सो लेट अस सी हाउ टू ज्वाइन इट. ओके, सो टू ज्वाइन इट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू नाउ. ज्वाइन का फंडा थोड़ा सा अलग है, आप जरा सा ध्यान दो. सो देखो स्प्लिट में क्या होता है, ये लिस्ट ये स्ट्रिंग है, राइट, और उसको आपने डॉट स्प्लिट किया, स्प्लिट के अंदर आपने सेपरेटर दिया, राइट. बट ज्वाइन में उल्टा है, you do the separator first. Okay, so whatever you want the list to be joined with, you do that first, then you do dot join. Okay, and then you give the list, and list is in data. Okay, so this is what I want. Okay, so I will cut this and put it over here, right. So isse mera string mil jayega, but still it will not work. Okay, let's see why. So if I run this, you can see expected string but int found. Okay, what does this mean? Join करने के लिए डेटा के अंदर हर एक एलिमेंट स्ट्रिंग होना चाहिए. ओके, बट इफ यू रिमेंबर, ये हम लोगों ने क्या किया? डेटा के अंदर सेकेंड एंड थर्ड एंड इनफैक्ट फोर्थ एलिमेंट को हम लोगों ने इंटीजर कर दिया है, राइट. तो अभी अपना काम क्या है? पहले ये सबको string banana, right. So there are many ways of doing this. Simplest way will be data is equal to list. I will use the map function. Okay, so map function तो सबको पता है, उसके अंदर str पास करूंगा मैं और डेटा पास करूंगा. Okay, so what this map function does, डेटा का हर एक एलिमेंट को लेगा, स्ट्रिंग फंक्शन से रन करेगा और उसको रिटर्न करेगा. ओके, सो दैट आई एम जस्ट रिप्लेसिंग इट ऑन टू डेटा. ओके, सो डेटा का सब कुछ मैं स्ट्रिंग बना दिया, दैट्स इट. ओके, सो दैट इज माय नेक्स्ट स्टेप. नाउ इफ आई रन दिस, इट शुड वर्क. ओके, यू कैन सी एवरीथिंग वर्क. नाउ लेट्स कम ओवर हियर एंड सी द आउटपुट. ओके, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग द आउटपुट, बट थोड़ा सा मेस्ड अप है. क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ? एनी आइडिया क्या गलत हो गया? नेक्स्ट लाइन पर नहीं आया ना. यस, न्यू लाइन करने भूल गया मैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने न्यू लाइन निकाला था, तो वापस ज्वाइन करने के बाद भी न्यू लाइन डालना चाहिए ना. सो यहाँ पे मैंने पूरा ज्वाइन कर दिया. उसके बाद आई कैन डू प्लस \n. ओके, सो मैंने यहाँ पे \n ऐड कर दिया. नाउ लेट्स रन दिस, लेट्स सी कैसा आउटपुट है. परफेक्ट. ओके, सो आई एम गेटिंग द हेडर, then all the data, all the calculations are done. अब मुझे और थोड़ी चीज चाहिए. क्या चीज चाहिए? सब टोटल, और क्या है ये क्या चाहिए? टैक्स और टोटल. या, सो वो चाहिए. सो लेट्स कम डाउन. सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, आई विल सिंपली रिप्लेस दिस विथ
That's it. Okay, so I will write fp out dot write subtotal, fp out dot write tags, and fp out dot write this thing. Okay, but मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए. मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए? ऐसा इक्वल टू नहीं चाहिए मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए? कॉमा सेपरेटेड में चाहिए. इफ यू लुक एट इट ओवर हियर इन द ओरिजिनल फाइल, यू कैन सी सब टोटल, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा. जितने ऊपर कॉमाज है उतने ही नीचे भी कॉमाज है, राइट? सो लेट्स पुट दैट. Okay, so let's take this, come over here, and instead of this I will put a comma over here and all the remaining commas over here. Okay, comma over here and all the remaining commas over here, one comma over here and all the remaining commas over here. Done. Okay, so let's save it. Done. अगर आउटपुट देखूं, अरे फिर से भूल गया मैं. यहाँ पे मुझे हर एक इसके बाद मेरे को क्या चाहिए था? \n and \n. Okay, so now let's run it one last time. Perfect. You can see this is the original file and this is the output file, right? Perfect. Now let us see. अभी हम लोगों ने प्रोसेस तो कर लिया. Let us see whether it really did something or not. Okay, so this is the original file and this is the output file. Let's open it. Perfect. Okay, so you can see all the values are processed और यहाँ पे data भी आ गया. Okay, so now you can imagine, you can just come to fruits, you can change the quantity. Okay, so let's say 5, you can put it over here 2, let's say 12 and 45. The cost changed to 30. Okay, so after changing the input, you just run the code that will give me my new output. Okay, so जो भी changes है सब apply हो गए. Perfect. Okay, so any doubts till now? तो एक मैंने example आज दिखाया आपको fruits का, right? So basically here what you have to do is, if you check the activity, you will see here also there are two files. One file is marks.csv. Okay, ये है मेरा marks. उसके अंदर रोल नंबर है, पहले नेम है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स है, टोटल है, परसेंटेज है और रैंक है. ठीक है, सो दीज आर द कॉलम्स. उसके अंदर से मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये इसके मार्क्स दिए हुए. व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द टोटल, find out the percentage, and you have to find out the rank. Okay, so based on the rank this entire list should be sorted. Okay, so rank number 1 ऊपर आना चाहिए, rank number 2 उसके नीचे, 3 उसके नीचे, ऐसा. ठीक है, तो रोल नंबर वाइज फिलहाल sorted है, if you see, right? बट मुझे परसेंटेज के हिसाब से रैंक आना चाहिए और रैंक के हिसाब से सॉर्ट होना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट you should do. Okay, so let me show you sample output. So you can see, so I am expecting this output. Okay, so sorry, this is the input marks.csv file and this is the sample output. Okay, so you can see there is a header, right? Header as it is है और roll number 6 जो है वो एक्चुअली टॉपर है. इफ यू सी, रैंक नंबर 1 है बिकॉज उसका 72.33% है, तो इसके लिए वो टॉप पे आ गया. ठीक है, उसके बाद 69.67, राइट? सो यू कैन सी हाउ आई एम कैलकुलेटिंग द टोटल ऑल्सो. टोटल भी 2 ही डिजिट का होना चाहिए. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, मतलब उधर राउंडिंग भी करना है आपको, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर, राइट? ये भी आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल तो आपको बताया है फ्रूट्स वाला. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द सिलेबस एंड सी व्हाट इज पेंडिंग.
Okay, so we have covered almost everything. Now this is remaining with keyword, and then we will look at some modules. Okay, so let's open, yeah, so let's quickly do this. So open, the file name is names, and the mode is, let's suppose, read. Okay, and then I would do f dot close, fb dot read, read line. Okay, and let's print it, or let's do better, we will use for loop line in fp, and we can print all the lines, print line. Okay, so let's say line from here to -1. Okay, let's run this, and I get everything. Okay, so everything from orange to all the grapes. If you remember in the last lecture we had this, right? So let me remove everything, let's keep these, only these elements. Okay, so now if I run this again, I get orange, apple, pear, watermelon, and grapes. Perfect. Okay, so now when do we use with? Okay, so normally when we want to use, whenever we open a file, we will have to close it, right? So if you do not want to do this every time, then what you can do is you can use a shortcut is with the help of with. Okay, so the way you use it is, just look at this. So basically what you do is you take this from here, remove it, and just write with. Okay, so with open, and then you will say as fp. Okay, and colon. So what you're doing is you are just rearranging the stuffs a little. So what you're doing is with open, whatever expression you want to do, so with this, and save it, whatever the result comes, save it as fp. Okay, and then you start a new block. Okay, and the best part is you can put this block inside it. Okay, so when I press tab, now these lines come inside this block. Okay, and now the best part about with is you don't have to have a close statement. Okay, so whenever the with block exits, whenever it comes out of the with block, the file is automatically closed. Okay, so that is what the with block does. Okay, so you don't have to manually specify the close command. That is the advantage of using with. Okay, so let's run this now and see what is the difference. And you can see there is no difference, exactly the same output. Only advantage is you don't have to specify the close command. Okay, so even if you forget that you have to close the file, it still will not create any issue. Okay, okay, so I hope the with command is clear. With is just another way of doing the same thing. Okay, okay, next we will go for the other modules. So let's clear everything, and we are going to look at two modules. So now throughout the course we are going to look at various modules in Python. Okay, so at every stage you will see different modules. So we have already seen the math module. Okay, so if you remember, for square root, sine, cos, log. So all these things we have used the math function, right? Sorry, math module. So similarly, there are lots of other modules that are there in Python, and you can go through it whenever you have time. I will share the link with you. So these are all the standard libraries that are there in your
Python included in Python, but this is not the only list. There are millions of packages that are there which you can download separately. Okay, so that is not a issue over here. So I will just put this so that you can check it out later whenever you want. Okay, so we are going to look at the OS module first. Okay, so let's look at the OS module. So to use any module, you have to first import. So import OS. Okay, and once you do that, now you can run any commands related to the OS module. Okay, so let's say OS dot. Okay, and as soon as you do dot, you can see there are lots of things that are there. Okay, let's say I want to get the current working directory. Okay, so which folder I am currently in, I want to find out. Okay, so I can do that with os dot get current working directory, cwd. Okay, so let's print this and see what is the output. And if I run this, you will see I am currently in c:users power desktop python. Okay, so this is the folder in which this file is present. Okay, now you can actually change the directory also. So you can do os dot change directory, and here you can specify which where do you want to go. Okay, so let's say c:, I want to go to, let's say, users. Okay, so I want to go to this directory c:users. Okay, now this will not work. Why? Because this is a backslash, and in Python backslash is used for special characters. Okay, so if you remember, if you do backslash n, so this backslash n is a special character, and this n becomes special because of this backslash. अगर ये backslash नहीं रहेगा तो ये तो normal n हो गया, right? But ये backslash डालते ही ये हो जाता है new line, right? That means this backslash has has a different importance, right? So that means this backslash also is important, right? So to escape this, so you can add another backslash. Okay, so if you do two backslash, the slash is escape, backslash is escape, so that the normal backslash का जो importance है वो उसको नहीं मिलेगा. ठीक है, now I can run this, and after that I can find out the working directory. Okay, so before running this, I will print the working directory, and after running it, I will print the working directory and see what is the difference. Okay, so let's run this, and you can see, so before doing the change directory, I was in Python directory, and now I am in users directory. Okay, perfect. So these are some of the commands that are there. So there are lots of commands. It is not possible for me to cover all of them, but I will try to show you some. So Python OS module. Okay, so let's open that, and you can see all the names that are there. Okay, so let's check OS name. Okay, so let's print os.name. Okay, so if I run this, you can see it is NT. Okay, so Windows NT, that is what we call it, right? So you can see NT means Windows. Okay, and there is Java runtime environment. So like this, there are lots of different codes that are given. So then there is change directory, get current working directory. There are lots of things. You can just go through it. I will show you this one, get env. So let me show you get env. And now what is this get env? So now for that, you have to first look at the environment variables. Okay, so you must be knowing about environment variables. In the first lecture, we used it to set up Python, right? Manually setting up Python, we can do it with this, right? So if you open this, you can see there are all these variables that are there, right? So there is this path variable, then OS variable, Java home, right? So if you want to get any of the environment variables, then you can
use this command. Okay, so let's say I want to find out what is the value of Java home. Okay, and now if I run this, you will see Java home is this folder. Okay, so this is the Java home. You can see perfect, right? So that is exactly what is Java home, right? Okay, so these are some of the commands that are there. You can just go through this, what all things are there. So if you want to create a new directory, you can do a make directory. Okay, with that you can create a new directory. Let's try that. Let's say make directory, and let's call it. So I have to provide the full path, I think. Okay, so let's put fruits. Okay, and I have to escape all of these. So let's escape all of these, and yeah, so you can see this is the actual path of this folder, and inside that I'm trying to create a fruits folder. Okay, so let's see if this works, and that's it, it worked. And let's see, you can see there is a fruits folder, right? So you can see this is how you can make a directory using OS command. Okay, so like that there are many commands that are there you can use. So you can use remove to remove directories, remove files. You can rename files, replace. You can remove directory. You can scan directory. Okay, so let me show you one more thing. uh, I think, yeah, there is list directory. Okay, okay, and here I can say, let's say for example, let's find out what all things are there inside this folder. Okay, so let's run this, and you can see it gives me all the files and folders that are there inside this folder. Inside this folder, what are things are there? So you can see, so there is fruits.csv, fruits output.csv. So everything that you can see over here, I can see in the command line also. Okay, perfect. Okay, so like that there are so many commands that are there in the OS module, mainly related to file handling. Okay, so creating and renaming files, changing the directory, deleting directory. So all these things can be done using the OS module. Okay, so that's it for OS module. Then the another module is SYS module. Okay, so let's look at the SYS module, SYS. Okay, so this is system specific parameters and function. Okay, so all functions related to the system is given over here. Okay, so let me just scroll and show you all the functions that are there inside this. So here also lots of functions are there. So there is this function called sys.exit. So if at all you want to come out of a program at any time, you can do sys.exit. So that will come out of, so the way you do break uh, in a for loop, you do break. In a function, you do return. Similarly, in a complete program, you can do sys.exit to come out of a program. Okay, so you can see get Windows version. So let's try this out. So print sys.get Windows version, and you can see this is what it shows me, right? So these are some of the things that are there inside this. So let me just remove the print command and then run it. Sorry, not without the print command. You can see, so the major version of my Windows is Windows 10. Okay,
and minor is 0, and the build currently I'm using is 19.0.42. Okay, so that is how you can get the version of your Windows. So if you use Ubuntu, then it may give you major version as 18 if you're using Ubuntu 18, right? So like that. You can also use this sys.modules. Okay, so let's run this, and you can see all the modules that are there inside your uh, Python installation. Okay, so you can see all the modules. Okay, so utf8.py, then there are a lot of modules inside. By default, that is there inside Python. Okay. Okay, so let's go to path. So you can also set the path for your where you want to search the modules, so that you can set it from here. You can also find out what is your platform. Okay, so this is important if you are making a software which is platform dependent. Okay, so you can see it says Win32 or basically Windows, right? So if you want to find out, let's say whether it's a Linux, Mac or Windows, so you can run this function and find out, and run different programs for different operating systems. Okay, so that you can do with the help of this. Okay, so yeah, so this is another thing that is important. So sys.standard in and sys.standard out. Okay, now you must have used the input command to take input from the user, and the output print command to do output to the screen, right? Now these two commands are internally, Python has used these system.standard in and system.standard out to write the code. Okay, so so if you want to create your own print command or your own input command, you can use this to do that. Okay, and you can use sys.version to find out which Python version you are using, so that you can do run with the help of this. That's it. Okay, now one very important thing that I would like to show is this one, sys.argv. Okay, so let me copy this, and this is very important if you're making command line applications. Okay, so let me show you what that is. Okay, so let me run this, and you can see right now I'm getting this, right? This as the output. Okay, so this, because it is running from PyCharm, it is not clearly visible as to what is happening, but let me show you. Let me go to Python and let me open a command line. Okay, so I'm going to run the same program without using PyCharm. Okay, so I've shown you this in the first lecture. So if I do cd desktop, I go into desktop, I go into the folder Python, and here if I do ls, or sorry, dir, I can see all the files and folders, right? So उसमें से मुझे ये वाला फाइल रन करना है, main.8.py. Yeah, so main.a. So if I want to run that, I can simply say Python main.8.py. Okay, so if I run this, let's see what happens. Okay, so now the thing is, my Python installation, I think, is not proper. It is not showing in the paths folder. So let me quickly resolve this, so you can see how you can also resolve if by chance this happens to you.
you can also do it. So just let's go to C drive. So this is where my Python is. You can see python.exe. Okay. So now the problem is, yesterday I was working on some Android app. So I run some command and my system variables are gone. So I can just say edit system environment variables, go to environment variables. And here I just have to go to the path, double click, and just check if Python is already there or not. Okay, mostly it will not be there. Yeah, so Python is not there. Okay, so since Python is not there, I will just copy this path, copy, and put it at the end. Okay, so click on new and paste it over here. Okay, click OK, OK, and OK. Done. So now let me close this and open Python again. Sorry, command line again, and type Python and see. Yeah, so now it's working, right? So this is how you can install it if you ever get this kind of an error where Python is not recognized. Okay. So next, what I wanted to show you is, if I open this and if I go to the directory desktop cd python, and here if I do python dot main 8.py, if I run this, you can see what I'm getting, right? So what this argv does, that is what I want to show you. Okay, so what this argv does is, it gives you what all parameter you're passing in the command line. Okay, so right now you're passing only one parameter, that is the name of the program. Okay, so let me show you what happens when you pass something like this. Okay, so if you press enter, can you see arg.v is giving me all the parameters that you are passing. Okay, so you can say main 8.py, then 5, then 4, then 3, then 2. So everything that you are passing is coming over here. Okay, now you may ask, sir, what is the use of this? I can get this from input also, right? So let me show you what is the difference. Okay, so let's say I want to find factorial of a number. Okay, so what was the program for factorial? Task number कौन सा था factorial का? Let's take task number 17. 17 नहीं, 18. हाँ 18. ठीक है, ये वाला टास्क लेते हैं. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ठीक है, ये प्राइम नंबर वाला टास्क है. ठीक है, now here if you see, if I right now run this program, let's see what happens. So if I run this program, it is waiting for something. Why? Because you are having this input statement. Okay, so आपका पूरा program रुका हुआ है किस चीज के लिए? आपके input के लिए. That means your program will not go ahead unless you put some value. Okay, so let's say I put 45 and then press enter. Now the program works. Okay, so just imagine you are on a server. Okay, and you run the code and you forgot to put the input. What will happen to the program? आपका entire server रुका हुआ है आराम से. जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे तब तक कुछ आउटपुट नहीं आएगा, राइट? और पूरा सर्वर बंद पड़ा है, राइट? So that kind of a thing is not allowed. Okay, in some kind of systems. Okay, in fact in majority of the cases that should never happen, that the program is waiting throughout for some input. So in that case what you do is, ये input statement ही सबसे खतरनाक है. Okay, so it makes the program wait. Okay, so I don't want that to happen. So what I will do is, I will come on top, I will import SYS module. Okay, and then instead of doing this input, I will do sys dot argv. Okay, and from that I'm going to take the, so 0th parameter. If you see, look at it over here. So 0 is always the program name that we don't want. I want the
next parameter, that is 1. Okay, so I will say 1. Okay, so now if I run this, I don't have to run this over here, I will run here. Okay, so let's run this and give 5 as the input. Okay, so you can see if I run this, you can see I'm directly getting the output. I'm not waiting for anything. Okay, I can change this to 12, it still gives me output. I can change this to 34, it still gives me output. So you can see the difference between taking the input from a user and giving the input through command line. Okay, दोनों में input दे रहे हो आप, but एक ब्लॉकिंग है, दूसरा नॉन ब्लॉकिंग है. ठीक है, तो इसके अंदर देखो, अगर आपने कमांड रन किया और उसके अंदर इनपुट दिया तो उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है, बट वो कभी रुकता नहीं है, राइट. बट अगर आपने यहाँ पे इनपुट यूज किया तो वो रुक जाएगा, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ दिस. ओके,